अ, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। अ, नमस्कार। आज जैसा कि आप जानते हैं कि वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री के द्वारा एक लेक्चर का आयोजन किया गया है और इस लेक्चर का जो कहें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं सबसे पहले वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री के बारे में बताऊं तो वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री की स्थापना प्रोफेसर अमरेटस अरुणा सिन्हा मैम और जयलक्ष्मी कौल मैम ने किया और इसके अभी तक जो है 2 साल लगभग हो चुके हैं और लगातार हर महीने जो है एक लेक्चर या 2 लेक्चर इसके माध्यम से किया जाता है। इस संस्थान से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, इसके मेंबर भी हैं जो भारत से भी हैं और भारत से बाहर के भी लोग हैं, विदेशों से भी हैं। साथ में ये वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री की सबसे बड़ी विशेषता है कि अभी तक जो भी लेक्चर्स हुए हैं और जो भी सेमिनार्स वगैरह हुए उसमें उसमें एक बड़ी उपलब्धि यही है कि जितने नए नए रिसर्च हुए हैं, जितने नए नए नवीन विचार आ रहे हैं, उन सभी को जो ज्ञान अर्जित करता है उनके माध्यम से वीआईएच उनको जोड़ते हैं और उसके बाद जो भी नवीन और नए खोज हैं उनको जो है भारत की जनता और विश्व के जो लोग हैं उनके सामने रखने का एक सफल प्रयास करते हैं। इसमें अभी तक लगभग लगभग हमारे वीआईएच से 20 लेक्चर्स हो चुके हैं और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे जो गतिविधियां हैं वीआईएच से, जैसे कि कुछ कोर्सेस चलाए जा रहे हैं ताकि इतिहास में जो चीजें हैं जो पहले लिखी जा चुकी है और जो अब है उसमें जो डिफरेंसेस है उस चीज को पाटने का काम वीआईएच के माध्यम से किया जा रहा है। और साथ में जो मूल उद्देश्य है कि जो सत्य है, जो इतिहास में जो सत्य है उस चीज को लाना और जनता के सामने प्रस्तुत करना ही वीआईएच का मूल उद्देश्य है। और इसके लिए हमने आज जो लेक्चर रखा है उसमें है जम्मू कश्मीर में ब्रिटिश नीति 1931 से 1947, ब्रिटिश पॉलिसी इन जम्मू एंड कश्मीर 1931 टू 47। इसके हमारे सबसे प्रमुख वक्ता हैं समर खजूरिया सर जो हमारे बीच मौजूद हैं और डॉक्टर धर्मवीर गुप्ता सर जो कि एक अपने आप में मिसाल हैं, क्योंकि जो घटनाएं 1947 में घटी है उसके वो साक्षात प्रत्यक्षदर्शी भी रहे हैं। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं इस लेक्चर का और भी जो है महत्व जो है बढ़ जाता है। तो मैं सबसे पहले समर खजूरिया सर के बारे में एक बार परिचय करना चाहूंगा कि डॉक्टर समर खजूरिया सर जो हैं एक अधिवक्ता भी हैं, साथ में आज जो है अखिल भारतीय हिंदी महासभा के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अभी कार्यरत हैं। और इनकी जो है उपलब्धि ये है कि नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे बुक भी पब्लिश हुआ है और कई जर्नल्स भी पब्लिश हुई है। साथ में इन्होंने जो इनकी विशेषता है कि जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है उस पे जो है समर खजूरिया सर ने काफी अच्छे से वर्क किया है और इनके ज्ञान से हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से इनके ज्ञान को हम लोग अपने प्रकार मतलब जानेंगे और जो नई चीजें हैं जो हमारे सामने सर रखेंगे उस बात को हम जानेंगे। साथ में धर्मवीर सर हैं जो कि धर्मवीर सर के बारे में अगर मैं बताऊं तो आज 80+ उम्र हो चुकी है, लेकिन आज भी सर एकदम हष्ट पुष्ट और आवाज जो है आज उनकी बुलंद है। और सर का विशेषता ये है कि जो 1947 में पीओके, आज जो पीओके कहा जाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, सबसे पहले धर्मवीर सर जो है मीरपुर कोटली के रहने वाले हैं। जब 1947 में पाकिस्तान के द्वारा उसे ऑक्युपाइड कर लिया गया तो उन्हें वहां से अपने फैमिली के साथ जम्मू कश्मीर आना पड़ा और जम्मू से फिर उधमपुर में वो आ गए और यहीं बस गए। तो वो जो आंखों देखा हाल है, जो उन्होंने उस दृश्य को देखा है, और भी बहुत सारे लोग जो डिस्प्लेस हुए हैं और जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में आज धर्मवीर सर हम लोग को बताएंगे। तो आज दोनों सर का लेक्चर है। तो सबसे पहले मैं इसके लिए डॉक्टर सुमीर खजूरिया सर को आमंत्रित करूंगा कि आप आए और अपना व्याख्यान दें। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है। मुझे सुन पा रहे हैं ना? हाँ आ रही है, खजूरिया आ रही है। जी जी।
सबसे पहले मैं बनारस इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री को साधुवाद देता हूं कि आपने एक बहुत ही विशेष इशू पे आज का जो था वो प्रोग्राम रखा है। वैसे भी आपकी गतिविधि सराहनीय है और साधुवाद है कि आप हिस्ट्री की फाउंडेशन में काफी योगदान जो है अगली पीढ़ी के लिए छोड़े। मैं सबसे पहले डॉक्टर अरुणा सिन्हा जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे समय दिया और बुलाया और खास विशेष इशू जो है जम्मू कश्मीर का, इस पर बोलने का अवसर दिया। बाकी जितने भी इस बनारस इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, मैं सबका धन्यवादी हूं और मेरे ख्याल में जो भी कुछ मैं आगे इस जम्मू कश्मीर के उपलब्ध में कुछ बोलूंगा वो शायद आपके काम आएगा। और विशेष तौर पर इस अवसर पर जबकि आजादी का अमृत उत्सव जो है पूरा देश मना रहा है। आज का मेरा सब्जेक्ट मैं थोड़ा अंग्रेजी में ही बोलूंगा क्योंकि इसमें ज्यादा जो है इसमें मेरा मटेरियल ही इंग्लिश में ही इकट्ठा हुआ है, तो मेरा ख्याल है इंग्लिश में ही बोलूंगा, ये सारे को कन्वे भी हो सके। तो दिस इशू जो है टुडे इज माय सब्जेक्ट, इट इज अबाउट British policy on Jammu and Kashmir, especially during 1931 to 1947. If we go back to the period when this Jammu and Kashmir state in consolidated form came into existence, a period back in 1846 AD, that is on 16th March 1846, when a treaty of Amritsar came to be executed between British government and Maharaja Gulab Singh. The state at that time, which came into existence in composite form, consisted of 222,236 square kilometer area, which was connecting with Turkestan, Chinese Tibet, Punjab, Northwest Frontier Province, Afghanistan, etc. And including our Punjab also, that includes East Punjab and West Punjab. This state, after coming into existence, was administered through these regions. One was being called as Jammu, and historically it was also known as Mother Desh. The another region that was Kashmir Valley, it is connected with Kashyap Rishi. It is connected with Kashyap Rishi. And third is Ladakh. That includes Tibet. Tibet was part of the Tibet. It was also part of our Jammu and Kashmir state. We had this state is strategically very important. Geographically, since it was connected with big powers like Russia, Britain, etc., including China. And this state had very importance because of the trade route, also called as Silk Route of that time. The treaty which came to be executed between Maharaja Gulab Singh and British government, there was no doubt a condition that supremacy of a British government will remain, but that was limited to certain things only. Otherwise, it was a sovereign state. Maharaja Gulab Singh had independence in all subjects, everything,
only restriction which came in agreement was to join in Commonwealth Army in case of any requirement of defense by the Britain government. The another thing was that Maharaja Gulab Singh will not engage any European origin in the state of Jammu and Kashmir. And a third condition, which was there in consideration of this supremacy, he was required to annually present certain pair of this Pashmina goods to British government annually. Nothing more than that. No taxation, anything. Everything was independent with this Gulab Singh. And this Dogra dynasty went on fourth generation up to Maharaja Hari Singh. That was the last ruler of our Jammu Kashmir state. About British policy, I will refer some background of their mindset of British people, what they thought about our Indian states. Our state then came into existence on 16th March 1846. It was under compulsion. British government could not handle this area. But just after lapse of period of 12 years, in 1857, when Government of India Act 1858 came into existence, their mind went on changing. They wanted to treat this, our princely state, as their agent, and the supremacy as an administrator, centralized power should remain with these British people, which was opposed by our Dogra rulers, and that was the basic issue of controversy, and which came afterwards, and to retain our sovereignty for the sake of our nation, our rulers fought against even British government also. That was the core issue, which afterwards, in other states of Jammu and Kashmir, the people were in favor of this independence. They fought for independence. They did everything, but the rulers were British government. The people fought against British government. But here, in our Jammu and Kashmir, the rulers of this Jammu Kashmir state were patriotic in nature. They were fighting for our motherland throughout this period. That is why our dynasty of Dogra rulers had to face very adverse consequences. I will further mention her Majesty's power of England in case of Jammu and Kashmir state was being executed by the Secretary of State. He was treated to be the final authority. He was doing everything on the dictates of that British royal palace, whatsoever they were directing against our Jammu Kashmir state. Since this our state was strategically very important on account of defense, trade and other issues, British government wanted to establish here, especially in Gilgit area of Ladakh, the trade agency. And agency was established in 1877. But under certain circumstances, from this very strong opposition from the rulers, it was withdrawn in 1881. It was established
1889 with limited functions, and later in 1935 on a lease, some portion was taken, although all taxation was being realized by our Maharaja of that time, Maharaja Hari Singh, 1935. But for certain local administration was taken on lease by the British people in 1935. The adverse this contention of British government very exposed in 1884. What they were thinking about our Jammu Kashmir state? I will recall this British government, which had applied a doctrine of lapse on princely states of our India. You recall the state of Rani Jhansi state. You recall Peshwa's dynasty rule. What happened? They applied this dynasty rule and grabbed those states, and the same formula they wanted to apply in our Jammu and Kashmir state by declaring the rulers of this state as incompetent, and that is why these rulers stood against these British people. One letter of 7th April 1884, so written by the viceroy of that time, posted in India, he wrote to the then Secretary of State. That was the crucial point when Maharaja Ranveer Singh, the son of Gulab Singh, who was ruling this state, was on his deathbed because age factor. He wrote in that letter, Viceroy, that the death of Maharaja Ranveer Singh is imminent, and what policy should applied by our people, British people on Jammu and Kashmir. He had given some notions that the heir apparent who was becoming Maharaja of the state, Pratap Singh, he was incompetent. He was also blamed about intoxications, etc. And he made some proposals that the state should be divided into 3 portions because Maharaja Ranveer Singh had 3 sons. They wanted to weaken this state, but ultimately, when the legal consultation was taken by the British people, it was decided that the heir apparent Maharaja Pratap Singh should be recognized, but we must keep a vigilance on the state and search for a movement how we can grab this power. This was all disclosed in a letter dated 23rd May 1884, so written by the Secretary of State to the then Viceroy of India. What happened? The consequences of this mindset of these British people. So coming into fore on 23rd May 1884, that number one, they took a very stern action. A resident for the first time was appointed in our Jammu and Kashmir state. So keep eye on the affairs of Jammu and Kashmir state, to search for the occasion when they could grab this power. Although they attempted earlier also during
Maharaja Gulab Singh time in 1854, but because of the strong protest from the Gulab Singh and taking the terms of the treaty before these people, that how you can interfere into my administration, that was postponed for some time. Ultimately, what happened? They took so many advantages. Although Pratap Singh was thrown to the throne of Jammu and Kashmir state in 1885 after the demise of Maharaja Ranveer Singh, but unfortunately, that resident, he took advantage by hobnobbing some elements in our Jammu Kashmir state, taking as a weakness of our own people an opportunity, and established here administrative council. Administrative council means two brothers of Maharaja Pratap Singh were made member of that administrative council, and that administrative council had to execute all the powers through resident. Although Maharaja Pratap Singh was on the chair as a ruler, but he was divested of all the powers. It was very crucial issue, very sting thing, and ultimately, despite protests, everything, his brother, father of Maharaja Hari Singh, Raja Amar Singh, who was younger brother of Maharaja Pratap Singh, he expired in 1905 AD, and some powers were restored to Maharaja Pratap Singh. लिंक का आप व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक किए ना आपने आपको? आपके व्हाट्सएप पे भी चला गया, मेल पे भी चला गया, नहीं तो फिर मैं अभी जस्ट भेज दे रहा हूं आपको इस पे. And in 1914 and fully in 19. ठीक है, मैं अभी तुरंत भेज दे रहा हूं आपको इस पे. Maharaja Pratap Singh also expired in September 1925. And his heir apparent, because Maharaja Pratap Singh was issueless, only the heir apparent, as per term of that treaty of Amritsar, by which this state was established, under that treaty, only a person from the blood of Gulab Singh could succeed and attain the power of this Jammu Kashmir state. And accordingly, Maharaja Hari Singh, who was from the blood of Gulab Singh, though not son of Maharaja Pratap Singh, was legally entitled to be crowned on the seat of Jammu Kashmir state. He was also made so many put in very so many problems, because of the reason they were fully aware that this Maharaja Hari Singh, who's very educated person, very mature administrator, and everything quality was there, they thought that he will not act as a tool in our favor. They created problems in his coronations also. It is very interesting point. Although Maharaja Pratap Singh, who expired in September 1925, his coronation was delayed for flimsy grounds, and ultimately they were bound to recognize him Maharaja, and his coronation was solemnized in February 1946. A daring steps where this issue
Maharaja Hari Singh how fought against these British people because he was a very mature administrator. The movement in 1922, when he was recognized as heir apparent of Maharaja Pratap Singh himself declared him as his successor. After getting all trainings in 1922, he was made senior member of the administrative council under Maharaja Pratap Singh. It was Maharaja Hari Singh, being a senior member of the administration, he kept a check on the British people because they intended to grab our state by construction of their bungalows in our Jammu Kashmir state. To restrain these British people to enter in our Jammu Kashmir state permanently to establish here or to make a trouble for our Jammu Kashmir people, Maharaja Hari Singh issued a circular order by which some conditions of attaining the permanent of this immovable property in Jammu Kashmir was created in 1922, and this process went on. In 1927, when state subject law, after becoming Maharaja, he brought into motion. And it is very interesting point. Some Gupkar gang of Kashmir, which claims that this state subject law was enforced by Maharaja Hari Singh only to protect Kashmiri people. It was wrong. Maharaja Hari Singh was patriotic in nature, particularly the son of sire, not only Jammu Kashmir, but he was committed for Indian people also. He had issued the state subject law in 1927 very firmly, only to restrain British people. But in 1932, he relaxed all those conditions. He created some provisions of Ijazatnama and Riayatnama by which our non-state subject could be settled here, and a number of non-state subjects were settled in our Jammu Kashmir since 1932. A wrong notion being created by this Gupkar gang, this all exposures from these two acts, one of 1927 and second is 1932. Number second, Maharaja Hari Singh was so keen for the motherland India. Immediately after becoming Maharaja, he dared to not allow fly British flag in the residency of Jammu Kashmir state at Srinagar. The moment this residency shifted as usual in winter period in Jammu area, he stopped their functioning in Jammu area, that residency. That was a very crucial at that time a step of Maharaja Hari Singh. He did not allow this residency to function at Jammu. Ultimately, British were forced to shift this residency to Sialkot, out of our state. They functioned from that day, but Maharaja did not. The third issue, very daring step, what he took. He was representing all princes of India in a round table conference at London in 1930. A very
interesting and forceful statement which Maharaja gave, delivered in Roundtable Conference in November 1930 are very interesting, very forceful, where he said, I am Indian first. A daring step. And it was not for Hari Singh, but it was a statement on behalf of all the princes of India, because he was representing all princes there at the land. Number second, he said, in case of our normal, as usual, we are bound by our treaties with British. We are not going to abdicate any of that condition. But in case of a freedom of India, I am Indian first. I will stand for India because I have taken birth on this land. I have grown here, and I will die here for the sake of my land. This was a very bold step taken by Maharaja. What consequences thereafter took place? I will further this quote the issue of Roundtable Conference. Why 1930 was important. Maharaja had left this land, Indian land, in November 1930 to attend Roundtable Conference at England. For twin purpose. Number one was to attend two Roundtable conferences. One was held in November and another in December or January. Another thing was that the heir apparent of Maharaja Hari Singh, now being called Dr. Karan Singh Ji, he was heir apparent of Maharaja Hari Singh. He was due for taking birth. For that purpose, he took along Maharani Taradevi for this maternity purpose, and the birth of this Karan Singh also took place in France. For these two reasons, he had to remain away from this state for, say, about 6 months. And before leaving the state, he made arrangement that this administration of the state shall be carried by Vicky Field. He was political minister, also acting as a prime minister of Jammu Kashmir at that time. He was a British origin. Another, the conspirator was a resident of that time. You know what was their contention? They were searching for some this time how to grab this power. Taking advantage of absence of Maharaja Hari Singh, they started hobnobbing with certain disgruntled element of Jammu and Kashmir on the basis of religion, communal basis. I have forgotten, as I have said, this letter of Viceroy of 1884. In that letter, he has also said that this Jammu Kashmir state is a Muslim majority state and the ruler is Indian. We have to think how the rights of these Muslims should be protected. These Muslims were, in fact, instigated to demand the removal of this Maharaja. In 1922 also, Mr. Galansi, he met
some Mohammedans of Punjab and Jammu and Kashmir at Lahore concentrated, they instigated them to fight for your right of employment in Jammu Kashmir state. Very interesting. Today the Gupkar gang, which is demanding for state subject law, right of protection of Jammu Kashmir state subjects. Only the Jammu Kashmir state subject can establish in Jammu Kashmir state. But what was their stand in 1931? They wanted all Punjabi Muslims should be settled in Jammu Kashmir state. The Muslims should get employment here, not for the Jammu Kashmir residents, but the residents of Punjab. This is was their stand. And today they are making another voice. We must understand what they were doing. After Karachi, 1930, this 30, Sheikh Muhammad Abdullah, he came in picture. Sheikh Muhammad Abdullah, if we go to his back history from birth, his birth has taken from mosques while chanting this Shariat Sasata, Quran's version. And he has remained very communal right from the day first. He got education from Aligarh University. We know what happens in there. The moment he passed out MSc Chemistry in second division, he came back to Kashmir in 1930. A post of lecturer came in to be advertised on the basis of merit. A Hindu Kashmiri Pandit who was holding meritorious position, distinction, first class first. He was appointed, but he said, it is my right, despite being MSc in the second class. He had passed this MSc chemistry in second division, and he wanted to steal march over the Hindu candidate only because he is a Muslim. He belonged to Muslim majority. That was the only reason. With this grievance, he settled here. He exploited all Muslims. With the connivance of that this resident of this Jammu Kashmir state of that time in 1930, and taking the advantage of absence of Maharaja, the situation brought boiling. Another figure, villain in nature, Abdul Qadir. He is said to be a Pathan. How he entered in our Jammu Kashmir state? Perhaps with the connivance of that resident and the Becky Field, who was Prime Minister of Jammu Kashmir state. He started, Mr. Sheikh and this Abdul Qadir, they started preachings in all mosques of Kashmir, instigating Muslims to fight against Maharaja, to throw him out. In such circumstances, you know, if a seditious activities comes out, what is the duty of government of its work? As a preventive measure, they arrested this Abdul Qadir. But this Ahmadiyas, who had come in for as this some
outfit to instigate here Mohammedans. Sheikh Muhammad Abdullah became a tool in their hand. Abdul Qadir. They tried to break open the Kashmir jail also in 1931. It was in July 1930. You know, even if we realize the situation, if today even somebody, a mob goes and break opens the jail, what will happen? What government will do? Whether they will garland these writers? There was firing. Some persons died. Not for the sake of state, not for the sake of Jammu Kashmir state or the people. Only on the name of Islam, they exploited in the name of Islam. That here Jammu Kashmir only Islamic rule should be enforced. What happened in 1935? Such a situation which became burning. Maharaja Hari Singh, being a ruler, appointed an inquiry commission headed by the Chief Justice of Jammu and Kashmir State. That was Mr. Dalal, V.J. Dalal. He was accompanied by two sitting judges of the High Court. Full court decided. It was their judgment. It was their inquiry report which narrate the stories, how this all has happened, what Muslims had their intention. Some witnesses had come before them. They had disclosed, we want Muslim right by bringing Punjabis from Lahore to Jammu Kashmir, not the persons of Jammu Kashmir state. Very interesting issue, which the Gupkar camp today is demanding that this 370 should be restored. State subject should be restored. What was their intention? They double speak on every subject. In 31, they wanted Punjabi should be brought here. Hamdan Punjabi should. Over the head of Kashmiris. So, after 31, some casualty took place. No doubt, 18 Muslims expired. But very interesting story, much more is to be disclosed. I am relying upon the report of that report of this Chief Justice of that time, Mr. Dalal. Police officers who were posted in Jammu, Kashmir, mostly belonging to Muslims community, who managed not to get registered even a single FIR against Mohammedans. The casualties of non-Mohammedans remained away from record. Under coercion, threats, etc., all non-Muslim police officers were not allowed to function. All what is I am saying, it is on the basis of the report of the Chief Justice of that time. That report, it is very interesting. When this commission was instituted, Mohammedans boycotted that institution. They did not participate because of the reason they were fully aware that this whole their gimmick would be exploded. Ultimately, this report has come in light. I have the report. I have put my book in publication perhaps in a month or so.
it would be out. I am making that quote also in public. It will also come before the public just after 1 month. It is very interesting. Not only 31, I have got some events beyond Kashmir also. Consequences of Kashmir. Gupkar Gang says only after this sacrifices, this say they were the freedom fighters. Although with their seditious activities. What they did in other areas, this riots were flared up from Kashmir Valley to Jammu region also. One instance in Kashmir itself, near Badgam, Kaniku is a place which was located in a jungle. Kashmiri Pandit families were staying there. They had made that land very appropriate for this cultivation. Entire their family was murdered. Very interesting. No investigation on the subject was held. It was never allowed. Hindu girl was murdered on 13th July 1931. When the cremation of that girl was to be done by Kashmiri non-Muslims, the gathering was there. What happened? All these Muslims and the British officers, they lathi charged and fired on these Kashmiri Pandits also. Regarding Poonch and Rajouri district, Muzaffarabad, very strange situation was created by these Kashmiri people, particularly Islamic forces. In the name of Islam, Hindus and Sikhs were murdered. I have some instances of Rajouri where 120 were murdered, Seri 12 were murdered, Bimbar 206 were murdered, and Kotali 20 were murdered. This is not my report. It is on the record of British Library. Letter is there. Movable and immovable properties were destroyed in those areas. These facts have never come on record. Very interesting. And third, Jainpur is another place in Mirpur. That is also there. They had destroyed the entire properties, both movable, immovable. Life losses were also taking place. Even after the arrival of army, certain worship places were also burned in the Rajouri, Mirpur districts. On 18th January 1952, 50 villages were looted by these writers, instigated by Sheikh Muhammad. 70 houses were burned. All these facts have never brought. Very interesting. In 1942, some events further took place, to which they say it is freedom movement. What kind of freedom movement was that? Sheikh Muhammad Abdullah made a slogan, Quit Kashmir.
Not they compared this Quit Kashmir movement with Quit India. That Quit India movement was against British people, but Quit Kashmir movement was against Jammu Dogras. Very interesting thing. Although this slogan was condemned by J.P. Kalpani, who was Congress president of that time, but Pandit Nehru supported it. Very interesting thing that these people have never remained faithful to the nation, faithful to the state. They stood for their own petty interests. And I have some records which go to establish that Sheikh Muhammad Abdullah was nothing but a stoogie of this British government. I am searching for a record. I could not get that. Perhaps he was being paid also for this. Thereafter, when this Pandit Nehru and Sheikh Muhammad Abdullah connived each other, what happened in our Jammu Kashmir state? Now again, I come to the British policy, what they were thinking. I am referring to 1945. When Azad Hind Fauj, Indian National Army, led by this Subhash Chandra Bose, received setbacks in 1945. Who was in charge of those? Defending this British people? That was Lord Mountbatten as a general headquartered at Singapore. To defeat the Indian National Army, some hints are there. Lord Mountbatten, who was close relative of British Palace, England Palace, key figure, he was sent there for particular purpose to defeat Indian National Army. He took covert this help from none else but Pandit Nehru and Gandhi also. He was misled. Because Gandhi on those days was full grips of Pandit. He was misled. What was Pandit Nehru's contention? He was fully aware that Prime Minister of India has already been declared. That was this Subhash Chandra Bose. If Azad Hind Fauj succeeds, I would be nowhere. Just for his own interest, he betrayed Indian also. He took the side of Britain. Very interesting thing. Although our debacle was there, but our morale never went down. This report is there. I will again recall the Jayanti, birthday of Subhash Chandra Bose, in which this G.D. Bakshi has referred to some documents also, that all the governors of India, they were asked to report what is the situation of our Jammu Kashmir in India. What is the position? Whether the Indians' morale has gone down. The report was very interesting. Every governor had reported that the situation has become very fluid. We cannot continue in India. We cannot continue to rule India anymore. We must surrender. But very phased manner, peaceful manner. Again, the posting of
that Lord Mountbatten, as Governor General of India, Viceroy of India, at the particular point of time when this transfer of power was to be made, what happened? He made consequences in case of Jammu and Kashmir. Again, I am coming to this, I am relating this whole issue with Jammu Kashmir. Although the issue of Bengal, Odisha, Assam, feud situation which had taken place there, resulting into two-nation theory. What happened in our Jammu Kashmir state? I am referring to Government of Indian Independence Act of 1947. What is there? The area of Punjab, which was only way, only access to link with India, Jammu Kashmir, because of the reason all these rail links, only rail link was Sialkot rail that was coming in Jammu via West Pakistan. That area had gone to Pakistan. Only area plain where from our access, road access would be maintained. That was Lakhanpur, Gurdaspur district, that was handed over to Pakistan. Even today, you go by that. It was another thing that negotiation held. Lahore was given away in lieu of this Gurdaspur district, and Jammu Kashmir was saved. It was very sacrifice of India for the sake of Jammu Kashmir state. And particularly Guru Gowalkar, the head of RSS, who was instrumental in all these transactions. Justice Meerchand Mahajan, who was a member of this Red Cliff Commission, Boundary Commission, who changed this line. Sardar Patel, he was instrumental in that. Only thing was that this Lord Mountbatten was kept up. If his interference would have been there, Jammu Kashmir had definitely gone to Pakistan. So far the Jammu Kashmir state is concerned, it was right from beginning. This Mountbatten had twice tried to meet Maharaja Hari Singh. He asked him, you go to Pakistan. You accede to Pakistan. They would have friendly relation. I tell you on behalf of Government of India, perhaps Nehru was taken in confidence. This conspiracy of handing over Gurdaspur district as per Independence Act, in this whole transaction, it was not only Lord Mountbatten, but Nehru was hand in glove in that. I have the corrected copy of that Indian Independence Act, which was drafted here, which was corrected by Mr. Nehru. That act, which transfers the Gurdaspur district to Pakistan, it was well within the knowledge of Nehru, and he was instrumental in that. He was also in this favor, this Jammu Kashmir should go to Pakistan. Another thing, very interesting, till date, it has not come. The moment West Pakistan was created, you know, there was northwest frontier area. It was also being called as Pakhtunistan. Those Pakhtuns were demanding their own homeland. The issue when
It was raised hot up in Pakistan. It was Lord Mountbatten that we have kept you or yourself this homeland, that was Jammu Kashmir. That is why this Kabali Hamla कहते हैं. Those Pakhtuns were sent here in Jammu Kashmir to capture this Jammu Kashmir under force. Are very interesting. This group of all Pakhtuns, all units of 100 Pakhtuns, they were headed by one regular major of Pakistan. 10 these non-commissioned officers, Subedar, Jamadar, etc., they were guiding them. And further to support these all, these 2,000 or 3,000 whatsoever Pakhtuns were asked to enter in Jammu Kashmir state, they were backed by Pakistan. This was the policy of British, that Jammu Kashmir should remain with Pakistan. Why? If this Jammu Kashmir remains with Pakistan, they will easily grab this land, because Pakistan, they were knowing it would be a weak nation. We can tilt them in any manner. We can do whatsoever we want to be. And these were the all such circumstances which we people have faced. And not only here, I will again further the policy of British government expose, that was about induction of Article 370. How this came out? This was again a very interesting story. Sheikh Muhammad Abdullah, who was not even a member of any this democratic institution, he was sought to be this planted as Prime Minister of Jammu. By none, only by British. This Lord Mountbatten or and it was, they succeeded. I have a letter which came from Delhi to Maharaja Hari Singh. It was somewhere in 1948. Just 3 to 4 days before Mr. Sheikh Muhammad Abdullah was installed as Prime Minister. Perhaps it was 8th March, 1948. 2 to 3 days earlier. From Delhi, these were draft was sent that you have to sign this. Under force, Maharaja Hari Singh. Under force, this letter was got signed. Malam Maharaja Hari Singh was forced to appoint this Sheikh Muhammad Abdullah. If again I refer to the transaction of this accession, Justice Mir Chand Mahajan, who was Prime Minister of Jammu Kashmir at that time, in 1947, in October 1947, he himself has disclosed when he went to Pandit Jawaharlal Nehru along with this instrument of accession. What were the words of this Pandit Nehru? We will allow this accession to be this allowed to be succession of Jammu Kashmir with only India only in case Maharaja Hari Singh transfers power to Sheikh Muhammad. Very interesting thing was there. Everything was, the people say, it was murder of democracy. What they did, whether Sheikh Muhammad Abdullah was democratically elected,
I will further disclose if we go to the facts, because much water has flown from the rivers. Even this Pandit Nehru, he himself was not a Prime Minister of India on 15th August 1947. I am referring to the document by which our India was governed since 15th August 1947. That was nothing. A provisional constitution order of 14th August 1947. That order was annexed with an amended Government of India Act 1935. Amended for democratic system was imposed there. All the powers of Governor General were seized. He was bound to act on the aid and advice of this Council of Ministers. What was his situation? This Mountbatten. He was merely a head of the state on 15th August 1947. If we go to the Constituent Assembly debate of 14th August to 15th August intervening night, 14th August and 15th August intervening night, at 12 of night, 3 developments took place. Number first, what was that development? The President of Constituent Assembly of that time, that was Dr. Rajinder Prasad. He himself took oath of our free India. He administered an oath to all Constituent Assembly members as a members of the free India. Second development was, in that resolution, it was decided the powers, these 7 powers, which has been transferred to India by the British people, who will exercise? That was decided, we the people. And who were we the people? That was the representatives of India forming Constituent Assembly. Third, although Mountbatten was appointed by the British India that he would be the Governor General of India, but our Constituent Assembly did not accept. They treated it as merely a recommendation. His appointment was made by the Constituent Assembly during the night hours of this intervening night of 14th to 15th August 19. The next development was there on 15th August. Mountbatten took oath as Governor General of India. Entire cabinet took oath as this cabinet government of this free India. British India word was gone. Very interesting. The document by which this India was to be governed since 15th August 1947, that was amended Government of India Act 1930. And if we go by that, there was no post of Prime Minister. Where from Prime Minister this Pandit Nehru called himself to the Prime Minister of India when there was no post in the Constitution. Very interesting. Our Indian Constitution only came on this 26th January 1950. Pandit Nehru, if he has signed somewhere as a Prime Minister of India between 15th August 1947 to 25th January 1949,
25th January this 50 was illegal, unconstitutional. He could not be called as a prime minister. His position earlier to that was not a prime minister. He was this deputy president of this constituent, this cabinet. The president was himself this Mountbatten, and deputy president. He was not holding the post of. And this post was never created by the Constituent Assembly of India also. Very interesting. I have searched each and every line Very good of lecture. this Constituent Assembly. There is not even a iota of evidence, murmur in our Constituent Assembly that there was something that this Prime Minister was created. Entire mockery. अब हमें यही कहना पड़ेगा, घर के ही हमारे अगर ये ऐसे जयचंद पैदा हुए हों तो ये स्वाभाविक बात है कि हमें दुख से जो है दुख झेलने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल में मैंने काफी समय लिया, तो मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Really, you delivered very interesting and very rare information has delivered by you. इसके बाद मैं सर को डॉक्टर धर्मवीर सर को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा और उनसे ये सुनना चाहूँगा कि आप जो 1947 में जो आपने देखा है और जो अनुभव है उसके बारे में आप आमंत्रित हैं। सर्वप्रथम मेरा आपको सादर नमस्कार। अब मैं आदरणीय डॉक्टर अरुणा सिन्हा जी, प्रोफेसर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एवं डायरेक्टर ऑफ VIH एंड एमिरेट्स का बहुत बहुत धन्यवाद दूं जिन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया है। इसके साथ ही माननीय बैजू कुमार जी जिन्होंने इस नाचीज के साथ संपर्क पैदा किया, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर, 1947 में मेरी आयु 12 वर्ष। आज आपको कोटली जिला मीरपुर, कोटली एक जिला मीरपुर की तहसील थी। मीरपुर की 3 तहसीलें थी, कोटली, बिम्बर और मीरपुर। उसमें से कोटली जो स्थान है मैं वहां का रहने वाला हूँ और वहां की आंखों देखी और आप बीती जो बातें हैं वो आपके साथ बहुत कम समय में ही समाप्त। कोटली जो नगर था उसकी सिचुएशन थी, वे बड़ी घनी आबादी थी। एक तरफ पहाड़ी और दूसरी तरफ दरियाई पुंछ था। इसके बीच में जो कोटली का स्थान था वो नगर बसा हुआ था। सन 1947 में देश विभाजन की चर्चाएं चारों ओर चल रही थी, परंतु हमारे नेताओं ने यह आश्वासन दिया था कि पाकिस्तान हमारी लाशों पर बने, जिस कारण हम आश्वस्त रहे और हम लोगों ने वहां से पलायन नहीं। कुछ दिनों पश्चात खबरें आने लगी कि पंजाब में मारकाट शुरू हो गई है, पेशावर में मारकाट शुरू हो गई है और जेलम जो हमारे मीरपुर डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल नजदीक था, वहां से बड़ी ऐसी खबरें मारकाट की आने लगी कि हमारा उत्साह जो था, हम लोग बहुत घबरा गए। इतने में पता चला कि कबाली पाकिस्तानी फौज कबालियों के बेस में उसने अपनी स्टेट पर आक्रमण कर दिया। गांव के लोग घबरा गए, वहां से उन्होंने प्लान कर दिया
और वो शहर की ओर, टोटली शहर एक छावनी में तब्दील हो गया और सभी तरफ हाहाकार मच गई। पाकिस्तानी जो कबायली थे उन्होंने शहर को चारों तरफ से घेर लिया। इसी बीच जम्मू कश्मीर आर्मी की एक टुकड़ी जो पुंछ से जम्मू की ओर जा रही थी, उसे कोटली में रुकना पड़ा। चारों तरफ रास्ते बंद थे, इसलिए वो आगे नहीं जा सके। इसी वक्त चारों तरफ से गोलाबारी शुरू हो गई। आर्मी की तरफ से भी उसको जवाब देने लगे, परंतु रात को हमारा जो शहर था, नगर था, वो गोलियों के बौछार से बहुत बुरी तरह, वो बड़े नजदीक आ जाते थे और उनको गांव वालों से हमारे नाम पता लग गए थे, वो हमें गालियां देते थे और इस प्रकार शहर के नजदीक आके वो गोलाबारी करते थे, जिससे हम ना रात ना दिन चैन ले सके। उसी वक्त एक दुखद घटना घट गई कि हमारे जो फौज थी उसके कैप्टन राम प्रकाश ने चारों तरफ मोर्चे बना लिए। एक मोर्चे से दुश्मन शहर में दाखिल हो गया। सारा शहर में हाहाकार मच गई। उस वक्त सभी महिलाएं एक मकान के हाल में इकट्ठी हो गई। उन्होंने अपने इर्द गिर्द मिट्टी के तेल के कनस्तर रख लिए कि अब मरने के सिवाय हमारे पास कुछ आ। कैप्टन राम प्रकाश ने कह दिया कि सभी नौजवान इकट्ठे हो जाओ, जिसके पास तलवार है, चाकू है, जो भी है वो लेके अब मैदान में आ जाओ। उसने कुछ आर्मी के जवानों के साथ मोर्चा संभाला और वहां से हम लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। भारत माता की जय, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। इन नारों से घबराकर दुश्मन ने यह समझा कि शायद कोई फौज आ गई है, तो जो दुश्मन शहर में दाखिल हो गया था उसने शहर को आग लगानी शुरू। हमारा 1/4 शहर आग में जल गया। जब हम आगे बढ़े तो दुश्मन हमारी इतनी संख्या को देखकर घबरा गया और वो अपने 3 जवान वहीं छोड़कर वो भाग खड़ा। उन 3 जवानों को पकड़कर हमने उसी आग में डाल दिया जो मकानों को लगी हुई थी। लेकिन इधर महिलाओं को बचाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। वहां से सब लोग, शहर के लोग फिर इकट्ठे हो गए। उनको कहा कि जब तक मोर्चा फतह नहीं होता कोई भी यहाँ आग नहीं लगाए। इसके बाद कैप्टन राम प्रकाश ने हम सबको लेकर आगे हम लोग बढ़ते गए। दुश्मन पीछे हटता गया और अंततः हमने फतेह पाई। मोर्चा अपने वापस ले लिया और हम सब लोगों की जान बची। लेकिन हमारी किस्मत में अभी कुछ अच्छा नहीं लिखा था। महीना 1.5 महीना हो गया था, अम्निशन हमारे पास खत्म हो रहा था और उस वक्त हमारी फौज ने अम्निशन के लिए वायरलेस किया। हवाई जहाज आया अम्निशन गिराने के लिए, लेकिन वो जहां हमने निशान दिया हुआ था, बजाय इसके कि उस निशान पर अम्निशन गिरता, वो दुश्मन के खेत में चलता। अब हमारे लिए मरता क्या ना करता, या तो अम्निशन वापस लाएं या अपने सब शहर को तबाह होने दें। हमें कैप्टन ने शाम 5 बजे का टाइम दिया कि 5 बजे तक आपके जितने नौजवान जा सकते हैं, कम से कम उसमें हमें 30 नौजवान चाहिए, जिनको हम भेजें और वो दुश्मन का एरिया से अम्निशन लेके आए और तकड़े जवान थे। 22 जवान शहर के, वो एक ट्रक में उन्होंने उनको डालकर और दुश्मन के एरिया में भेज। दुश्मन ने गोलाबारी शुरू कर दी, जिस कारण ट्रक का तो टायर पंचर हो गए और वो जवान ट्रक से उतरकर फील्ड में आ गए। दूर दूर लड़ाई होने लगी। अम्निशन की पेटियां कभी उनके जवान लेके जाएं, कभी हमारे जवान के ले आए, कभी उनके जवान लेके जाएं। ये प्रत्यक्ष दृश्य
मैंने सड़क के, क्योंकि बीच में एक सड़क थी, उसके सामने अम्युनिशन गिरा था, और वहां से हम लोग, शहर के लोग, ये देखते रहे कि किस वक्त अम्युनिशन वापस आता है, और हम लोग बच पाए। कुछ देर बाद जब 3 बज गए तो कैप्टन ने कहा कि और जवान भेजने पड़ेंगे, ये अम्युनिशन आने वाला नहीं। उस वक्त वहां वेद प्रकाश चड्ढा, जो आरएसएस के कार्यवाह थे, उन्होंने अपने साथ 10-12 लोग लेकर वो मैदान में कूद पड़े। शाम को 5 बजे तक संघर्ष चलता रहा। आखिर हम 6 बजे अम्युनिशन अपने क्षेत्र में लेके, लेकिन इस बीच में बड़ी दुखद घटना घट गई कि हमारे 13 जवान शहीद। लेकिन अम्युनिशन आ गया, शहर बच गया, उन 13 जवानों के शहीद होने पर। इसके उपरांत 2 महीने हमें हो गए थे, 2.5 महीने हमने इसी जिंदगी और मौत के बीच गुजारा। एक दिन प्रातः हमने देखा कि बहुत बड़ी फौज आ रही। सारा शहर घबरा गया कि अब तो बचने का जो शेष थोड़ा बहुत चांस था वो भी खत्म हो गया। लेकिन वो फौज हमारी थी। उन्होंने जब नजदीक आई, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, हमें थोड़ा हौसला हो गया कि चलो कोई तो हमें बचाने के लिए आया। लेकिन हमारी आशा पर पानी फिर गया जब उन्होंने आते ही कह दिया कि आपको आज शाम 5 बजे तक अपना शहर छोड़ना। सभी लोग हैरान परेशान कि घर, ये शाम को 5 बजे तक हम घरों से निकल जाएंगे, कैसे निकल जाएंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कोई पता नहीं था। हमारे कुछ जो नेता थे उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि इसमें बुजुर्ग भी हैं, बीमार भी हैं, बच्चे भी हैं, तो पैदल कैसे जाएंगे। उन्होंने कहा हमें कुछ सुनना नहीं, हमें जो ऑर्डर है हमें वही करना है। आपको 5 बजे इतना जरूर है कि आप 2-3 दिन, उनको अंदाजा होगा कि 2-3 दिन में पहुंचे, 2-3 दिन के लिए अपना भोजन, सर्दी का महीना था, मगर का महीना था, तो उन्होंने कहा कि अपने लिए शाल, कंबल, जो भी आप उठा सकते हैं उतना है वो लेके चले। जिन बुजुर्गों को आप उठा के ले जा सकते हैं साथ ले, जिनको नहीं उठा सकते तो बड़ी मुसीबत थी, कुछ कर नहीं सकते थे। बच्चों को, बुजुर्गों को जैसे कैसे घसीटते। 5 बजे वो आ गए, मकान खाली करो, मकान खाली करो, निकालो। हम लोग निकल के पैदल रातों रात आर्मी के उसकी हिफाजत में हम चलने शुरू हो गए। 2 दिन और 1 रात हम चलते रहे, कभी रुकते रहे, कभी चलते रहे, कभी रुकते रहे, और अंततः हम जंगड़, जो कि हमारे शहर से 30 किलोमीटर, 30 मील यानी 45 किलोमीटर दूर था, वहां हम तीसरे दिन वहां पहुंचे। जब वहां पहुंचे सबका हाल बेहाल हो रहा था। पहले देख रहे थे अपने आदमी पूरे हैं कि नहीं, हर आदमी एक दूसरे को ढूंढ रहा था, वहां मिल नहीं रहे थे, कोई पीछे है, कोई पहुंचा नहीं, कोई ज्यादा पीछे है। तो वो दिन हमारे लिए इतना परेशान कौन था कि हम शाम तक अपने लोगों को ही ढूंढते फिरते रहे। खाना तो क्या खाना था। इतने देर में मीरपुर, वो भी जंगल से दूसरी तरफ 30 मील, हमारा एरिया जंगल से पुंछ की ओर, और मीरपुर का एरिया जो है वो जंगल से जेलम की ओर, पंजाब की ओर। तो वो भी उतना ही था, वहां से भी लोग आने शुरू हो गए। एक दूसरे हाल पूछे, रिश्तेदारियां थी, पता लगने लगा कि कोई आदमी आया, कोई रास्ते में आया, कई रास्ते में भटक गए, कोई पहुंच गए। तो इस प्रकार चलते चलते हम लोग जो चलते चलते हम लोग वहां जगड़ में एक खेतों में हमें लटा दिया गया या बैठा दिया गया। जैसे दूसरे दिन ऑर्डर आ गया कि आपको जम्मू की ओर। हमने कहा इतने थके हैं, कोई साधन, कोई ट्रक का, बच्चों के लिए कोई साधन, कोई साधन। वहां से हमने कूच किया, जम्मू की ओर कूच किया। पहले दिन हम लंगर में रहे, उसके बाद चौकी चौरा रहे, उसके बाद अखनूर में रहे, उसके बाद
अंततः हम जम्मू पहुंचे। जम्मू हमारे लिए कोई प्रबंध नहीं, केवल एक दो लंगर लगे हुए थे, एक हरी मार्केट में और एक हरी टाकी में, और एक और जगह थी, ये कुछ लंगर रखे हुए थे जहाँ से एक एक दो दो फुलके और एक एक दो दो दाने सब्जी के मिल रहे थे। मतलब सब्जी के भी ऊपर जैसे नमक रखते हैं ऐसे दाने। दूसरे दिन हमने एडमिनिस्ट्रेशन से मिलने का प्रयास किया, उनको कहा भी हमें बताएं, हमारे रोजी रोटी रहने का कुछ भी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे। उन्होंने टोटल जवाब दे दिया कि हमारे पास कोई हमारा परिवार रातों रात वहां से सांबा, और सांबा से उससे छोटी गाड़ियां होती थी, सांबा से पठानकोट, और पठानकोट से हम 1 महीना पठानकोट रहे। और इसी प्रकार सारे जितने लोग थे, कोई जम्मू ठहरा, कोई पठानकोट चला गया, कोई दिल्ली की ओर भाग गया, कोई और कहीं कांगड़ा के कई हिस्सों में भाग गए। तो ऐसे अपने अपने रोजी रोटी कमाने के लिए हम लोग सारे। लेकिन इसके आगे तो आपको भी पता होगा, दिल्ली में एक कॉलोनी बनाई गई, एक अमर कॉलोनी बनाई गई, एक लाजपत नगर में 4 में कॉलोनी बनाई गई, जम्मू में रिहाड़ी बनाई गई, जम्मू में बख्शी नगर बनाई गई, और उसके साथ ही बिबर कॉलोनी बनाई गई। ऐसे ही उधमपुर में भी एक कॉलोनी बनाएगी 100 घर। फिर उन्होंने हमने एप्लीकेशन ली, एप्लीकेशन में हमारा नाम उधमपुर में निकला, और उसके लगभग 10 साल बाद 1947 से लेकर 1960 तक हम पंजाब का जो कांगड़ा जिला है उसके हमीरपुर स्थान है, जो अब हिमाचल में, वहां रहे, और वहां से यहाँ फिर उधमपुर। इस सारे अरसे में जो हमारे लोगों ने जिस तरह के वो जुल्म सहे, जिस तरह के, अब स्थिति ये बन गई है कि लोग तो हैं लेकिन उनकी बड़ी इच्छा है कि JKPO के वापस लिया जाए। हमें उस वतन की याद आती है, कम से कम हम अपनी आंखों में उस वतन को दोबारा देख सकें, अपने घरों को देख सकें। ये हमारी इच्छा अभी बड़ी प्रबल बनी रहती है, और हम चाहते हैं कि इस तरह का कोई जब तक व्यवस्था नहीं बनती, एक पिक्चर जैसे कश्मीर के बारे में बनी, ऐसी ही मीरपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बननी चाहिए, जिसमें मीरपुर के बहुत ही घटनाएं हैं, लेकिन समय कम होने के लिए मैं वो नहीं बता रहा। रजौरी की बहुत घटनाएं, मुजफ्फराबाद की बहुत घटनाएं हैं कि किस तरह उन लोगों ने कुओं में छलांग लगा के और अपनी जानें दे दी, किस तरह उन लोगों के साथ भी हुआ, उनको गोलियां मारी गई, पानी के बीच में गोलियां मारी गई, किस तरह हमारे लोग हमसे बिछड़ गए, और वो कभी इस जिंदगी में तो कभी मिलने का उनका प्रश्न ही नहीं। तो ऐसे भी अगर आप इस चीज को आगे चला सकें कि एक मीरपुर, दिम्बर, कोटली, रजौरी और मजहब, इस एरिया के बारे में भी अगर कुछ कर सकते, मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। तो भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने काफ़ी अपना जो अनुभव था, आपने जो बताया कि कैसे जो है आपने स्ट्रगल किया है, कैसे पाकिस्तान का इन्वेजन जब हो रहा था उस समय आप लोगों ने कैसे उनसे लड़ा, और कैसे उसके बाद फिर भारत में आके बसी कठिन परिस्थितियों का आपने जिक्र किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं चाहूँगा कि किन्हीं के पास अगर कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन है, तो सेशन ओपन है, आप कर सकते हैं सर से, दोनों सर से। सर नमस्कार। मैं प्रश्न कर सकता हूँ जी? हेलो जी बताइए। नमस्कार। हाँ जी जी बताइए सर जी, बोलिए। सर, ये मैं सबसे पूछना है कि जिन महिलाओं को वो एक हाल में बंद किया हुआ था
और तेल के वो कनस्तर रखे हुए थे, उनका क्या हुआ था फिर? उसके बाद जब मोर्चा हमने फतेह कर लिया, हमारी पिकट वापस हमारे कब्जे में आ गई, फिर उन महिलाओं को अपने अपने घरों में जाकर वापस अपने अपने घरों में। जी जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। किसी महिला को कोई, सिर्फ हमारी 5 महिलाएं जो दुश्मन साथ लेके गए थे जी, उनमें से भी 4 महिलाओं ने संघर्ष करके वापस आ गई, जी 1 महिला उनके कब्जे में। जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, मेरी ओर से क्वेश्चन है। मैं डॉक्टर संजीव गौतम हूँ। जी जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी आपने, और ऐसा लगा कि हम उसी युग में पहुंच गए, और वो बड़ा कठिन दौर जो आपने देखा और लिखा जिसके बारे में, उसके बारे में मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा। और क्योंकि मैं भी एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, मेरा भी काम कुछ जम्मू कश्मीर पे है। मेरा पीएचडी का काम जम्मू कश्मीर पे ही है, पर मैं कुछ आपसे प्रश्न करना चाह रहा हूँ। जिज्ञासा मेरी कि आपसे प्रश्न करूं, क्योंकि आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी 19वीं शताब्दी की और 20वीं शताब्दी की जानकारी दी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं आप मेरे प्रश्नों से कहीं ये मत समझिएगा कि मैं कहीं अन्यथा तरीके से प्रश्न कर रहा हूं। मैं आपसे जानकारी के लिए ही प्रश्न कर रहा हूं, किसी विषय को उलझाने की वजह से नहीं करूंगा। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे एक जिज्ञासा के रूप में है कि जो नेहरू हैं, मैं क्वेश्चन करूंगा कि हाउ नेहरू found Sheikh Abdullah and Sheikh Abdullah a favorite person for Jammu and Kashmir. Why he gambled on the name of Sheikh Abdullah on the state of Jammu and Kashmir? First question is this one. क्या आप क्वेश्चन 1 by 1 उत्तर देना चाहेंगे या फिर मैं? नहीं, मैं 1 by 1 नहीं है, क्योंकि ये भूल जाऊंगा, और दूसरा ये है कि इसमें मिंगल अप हो जाएगा। मैं सुनना चाहूंगा इसको। हाँ सर, इसमें ऐसा है कि जो पंडित नेहरू का मैंने पहले ही बताया कि पंडित नेहरू नो डाउट फ्रीडम मूवमेंट में उनका था, रोल रहा है, लेकिन इस चीज को भी भूलिए मत, वो एक रॉयल फैमिली से आए। मोतीलाल नेहरू क्या थे आप खुद जानते हैं कि वो कितने बड़े वकील थे। उन्होंने जिंदगी में किसके केस लड़े? ठीक है, उनकी भी फ्रीडम मूवमेंट में आई होगी, वो फीस जो थी वो सारी ब्रिटिश गवर्नमेंट से लेते, वो उसे इतना, हमारे जहाँ के लोग इतने अमीर ने थे कि वो जो इतनी फीस देते, वो उनकी उस जमाने में ही हजारों रुपया जो थी 1 डे की वो फीस लेते थे। जब वो मतलब 1 रुपए की कीमत आप खुद जानते हैं कि उस जमाने में क्या थी। तो ये पंडित नेहरू इंटरप्ट करूंगा, मैं उसी संस्था से जुड़ा हूँ, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, 3 मूर्ति हाउस में मैं रिसर्च एसोसिएट हूँ वहाँ पे, और मैं पांडुलिपि विभाग में हूँ। जो आप बता रहे हैं बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, थोड़ा आगे जारी रखें प्लीज। अच्छा, उसका दूसरा बात यह है कि पंडित नेहरू इनका जो था, आप पूरे रिकॉर्ड पे जाइए, नो डाउट इनकी जो थी पार्टिसिपेशन इन दिस फ्रीडम मूवमेंट दैट वाज देयर, वाइटल थी। लेकिन इसमें डिफरेंसेस को आप लाइए, जिसको में आप मुझे बताइए, क्या फ्रीडम मूवमेंट में क्या नेहरू फैमिली ने ही आजादी दिलवाई? कितने लोगों की जानने की है, आज तक जो है ये गाना भी चला कि मिल गई हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। क्या कितने लोगों की जान गई होगी? आज तक किसी का नाम नहीं आया। और दूसरी बात, जो 45 की बात मैं घटना बता रहा हूं, इन्होंने माउंटबेटन का साथ क्यों दिया? कि अगर ये आजाद हिंद फौज लड़ाई जीत जाती है तो यहाँ का प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस होगा, मैं किसी खाते में नहीं। ये सेल्फ हैंड
प्रधानमंत्री बनने के लिए ये किसी हद तक जा सकते थे। और इन्होंने अपने ये नहीं, मैंने अभी ये बुक जो है, मेरा थीसिस कंप्लीट हुआ, मैंने सुभाष चंद्र बोस पे भी बुक लिखी है। उसमें सबसे जो घटना जो देखने वाली, चौंकाने वाली आएगी, वो वहां का खजाना जो है आजाद फौज का जो गायब हुआ है उस पे आएगा। उस पे भी जो है एक मेरे पास नोट आया है जिसमें इसके पास, पंडित नेहरू के पास गया कि ये लोग जो है आपके इसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा इसको फाइल में बंद कर। खजूरिया जी, वो क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है? ये जो चीजें थी ये अंग्रेजों से मिले हुए थे। जहां तक पामिला माउंटबेटन की लड़की है, उसने किताब लिखी है, उसने कहा मुझे जो कुछ भी करना होता था मेरी मम्मी को, वो माउंटबेटन मेरी मम्मी को बोलते थे, वो नेहरू से काम करवा। खजूरिया जी, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कुछ रिकॉर्ड बोल रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, अपने ओपिनियन आपका ठीक है। और ये जो चीजें, वो जो चीजें हैं, तो पंडित, जहां तक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का चीज जो है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला भी ब्रिटिश पॉलिसी, वो ब्रिटिश पॉलिसी से जुड़ा हुआ था। मैंने पहले बोला है, ऑर्गेनाइजर पेपर में आया है, ही वाज टूगी ऑफ दिस ब्रिटिश पीपल। ये कौन? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। खाली मेरे पास ये लफ्ज नहीं आए हैं कि कहीं पैसे ले लिए हैं, वरना ये भी नजर आता है जिस तरीके की ट्रांजेक्शन हो रही है वो पैसे भी लेते। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बात करना, नेहरू की बात नहीं कह सकता, क्योंकि नेहरू पैसे के लिए नहीं था, उनके पास अपना पैसा फैमिली के थे। खजूरिया जी, आवाज आ रही है? जी हाँ जी। One thing is very mysterious. Why Hari Singh Dogra, the honor of Jammu Kashmir, left Kashmir after 47? Why? He was the honor. Why did he went to Bombay? हाँ, उसका भी मैं बताता हूँ, उसका भी मैं बताऊंगा। अभी और आपको मैं हिस्ट्री बताऊंगा। अभी मैं कुछ चीजें जो हैं, वो कुछ चीजें जो है अभी नहीं मैं डिस्क्लोज करना चाहता, जिसमें भी जो है आप बड़ी मजे की बात देखिए। ये ट्रांजैक्शन आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको मैं डिस्क्लोज कर रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या हुआ, वहां जम्मू कश्मीर जब एक्सेशन हो गया, यहां से हमारी आबादी जो थी 41 की सेंसस के मुताबिक 40 लाख गिनी गई थी, जो जम्मू कश्मीर 15 अगस्त को हमारा, इसमें पीओजे के भी आता है। 4 मेंबर चुने जाने थे, और एज पर रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दोज वर टू बी इलेक्टेड बाय द मतलब डेमोक्रेटिक बॉडी इफ दैट बॉडी वाज अवेलेबल इन दैट स्टेट। हमारी स्टेट में उस वक्त प्रजा सभा ड्यूली इलेक्टेड थी एंड दैट वाज अलाइव। इन्होंने उसकी अमेंडमेंट की है कि ये जो है नॉमिनेट की जाएगी ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहा हूं, और नेहरू ने करवाई है ये। और ये 4 मेंबर जो बनेंगे, उन्होंने वहां क्या गुल खिलाया, मुझे ये बताइए। पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखिए, उसमें एक लफ्ज जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उन्होंने एक लफ्ज नहीं किया, खाली 370 के लिए डोर टू डोर घूमते रहे। जहां तक ये क्यों करके हरी सिंह, जहां तक जो मैं छोड़ने की बात बता रहा हूं ना, वहां तक कहूंगा, ये वही जो थी 370 बनाने के लिए वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला डोर टू डोर, यहां तक के अंबेडकर ने ये बोला है कि ये मैं देशद्रोह का काम नहीं कर सकता 370। और जब ये देख रहे थे पंडित नेहरू, कितना ब्रेन इनका तेज था, इन्होंने बोला कि देखिए बात ऐसे है, सिक्योरिटी काउंसिल में देखे ट्रैप में लिया गया कि सिक्योरिटी काउंसिल में केस है, इस वक्त ऐसे है कि आप बीमारी का बहाना लेके चले जाइए बॉम्बे और अपनी पावर्स किसको दे दीजिए, डॉक्टर करण सिंह को। रीजेंट वाज अपॉइंटेड, और डॉक्यूमेंट्री वो कहते हैं 20 जून 1949 को रीजेंट अपॉइंट हुआ है। और रिकमेंडेशन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 4 मेंबर्स की, और उसको किसने भेजा, डॉक्टर करण सिंह ने।
क्योंकि 18 साल उसकी खाली उम्र थी उस वक्त, उसे दस्तखत करवाए गए। और किस डेट को, मजे की बात है, अपनी नोटिफिकेशन जो है रीजेंट की वो 20 जून 1949 की है, और ओथ जो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एंड कंपनी 4 मेंबर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑन दी अथॉरिटी ऑफ ये करण सिंह 15 जून को ले रहे हैं, 4 दिन पहले। और एक और मजे की बात है कि ये 4 बंदे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ग्रुप फोटो में आए हैं, जो अप्रैल में लिया गया है, उससे भी 2 महीने पहले। ये मैं नहीं बोल रहा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रिकॉर्ड बोल रहा है। और उसको महाराजा को टेम्परेरी तौर पर भेजा गया, और महाराजा गया फॉर द सेक ऑफ स्टेट, कि मेरे स्टेट को दुख ना हो। वो इसलिए नहीं किया कि वो भी अड़ सकता था, लेकिन उसने कहा मैं स्टेट की खातर जाऊंगा। अच्छा, वेल सेड, वेल सेड। काफी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। बाद में उन्होंने लोगों ने, जब महाराजा बाहर निकले तो उन्होंने सबने रंग बदल दिया। आपके डॉक्टर करण सिंह के भी अगर लफ्ज जाए तो ये भी बाप को ही गाली देते थे। आज तो इनके भी दिमाग जो है उल्टे, कहते हैं नहीं वो महाराजा बड़े अच्छे थे, उस वक्त इनके भी स्टेटमेंट उल्टे सीधे जो है बहुत कुछ। अच्छा, उनको घर के लोगों ने धोखा दिया। वाह वाह वाह, ये नई चीज सामने आई आपकी, बड़ी अच्छी बात कही आपने। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, सर मोहनलाल सर ने जो अभी प्रश्न किया है उसमें आप देखेंगे तो स्पष्ट है कि नेहरू जी को शेख अब्दुल्ला जी के द्वारा लेटर एक लिखा जाता है, उसमें भी स्पष्ट मेंशन है कि सबसे पहले सत्ता अगर मुझे देना है तो सबसे पहले आप राजा हरि सिंह को इस स्टेट से बाहर निकालो। तो ये दबाव बनाया जाता है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी के द्वारा कि महाराजा हरि सिंह को जितना जल्दी हो सके स्टेट से आप बाहर निकाले, तभी हमारे हाथ में सत्ता आ सकती है। और फिर इसके बाद मैं एक और इंस्टांस बताता हूँ। इसके बाद जब ये महाराजा चले गए, ये नेहरू जो है ये 60 में जम्मू आए, वहां पर लोगों ने झंडे चलाए, कहा कि ये जो है महाराजा को वापस लाओ। और नेहरू के उस जलसे में ओपन कहा है, मैं महाराजा को नहीं आने दूंगा, नहीं आने दूंगा, नहीं आने दूंगा। ये नेहरू की चाल, जो मतलब पब्लिकली इसकी जो है रिकॉर्ड में है। ये आज की पीढ़ी को पता लगनी चाहिए चीजें, आज की पीढ़ी को ये पता होनी चाहिए चीजें। ये सेमिनार रखे, कभी भी आप भी पठानकोट रखे, देखे आ जाएंगे। मास्टर साहब नमस्कार। आप सबको मेरा सुन रहे हैं श्रोता जितने भी हैं, इतना बढ़िया लेक्चर, आप गदगद हो गए होंगे खजूरिया सीखा। बहुत अच्छा। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट को मैं मुबारकबाद देता हूँ। जी सर, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री डिपार्टमेंट तो है ही, लेकिन VIH एक स्वायत्त संस्थान है और ये डायरेक्टली जो है वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री के थ्रू ही ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बहुत अच्छा मुझे पहली बार मुझे सुनने का मौका मिला। मुझे इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त कराते रहिएगा। जी सर, जो मैं महाराज जहाँ जाऊंगा आपको साथ रखूंगा, आपको कहाँ छोड़ूंगा। वही, और अगर किन्हीं और को प्रश्न करना हो तो आप कर सकते हैं। उसके बाद हम सेशन, चूंकि समय ज्यादा हो रहा है तो सेशन समाप्त किया जाएगा। इसके पहले अगर कोई श्रोता जो है किन्हीं के मन में अगर प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं सर से। इसके बाद फिर हम सेशन समाप्त करेंगे। बहुत हो गया, ठीक है, बहुत हो गया। अब मैं आगे के लिए धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर कल्पना सिंह जी को आमंत्रित करता हूं आए और धन्यवाद ज्ञापन करें सर। धन्यवाद बैजू। विगत लगभग 2 घंटे से हम सभी उत्साहित एवं ऊर्जान्वित होकर के ज्ञानवर्धक के रूप में इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहे, और इसका मुख्य कारण हमारे मुख्य अतिथि द्वय डॉक्टर सुमेर खजूरिया सर और श्री धर्मवीर गुप्ता सर जी का अद्वितीय वक्तव्य रहा है। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर सुमेर खजूरिया सर को सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। सर प्रणाम, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अनछुए गैर किताबी तथ्यों एवं अवधारणाओं को बड़े ही सहज लहजे में हम सभी के सम्मुख प्रस्तुत किया, जिससे न सिर्फ इस विषय पर शोध करने वाले विद्यार्थी लाभान्वित हुए, अपितु सभी वर्तमान संगठित राष्ट्र के निर्माण की ऐतिहासिक गाथा को भी जान पाए।
सर, आपको सहृदय कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ एवं आदरणीय मैडम के माध्यम से सभी की ओर से यह अपेक्षा करती हूँ कि भविष्य में भी आपसे बहुत कुछ सुनने और सीखने का मौका हम सभी प्राप्त कर सकेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। द्वितीय वक्ता के रूप में हम सभी को अपने अनुभव रूपी ज्ञान से दर्शन कराने वाले ऐतिहासिक नगर कोटली के विद्वान श्री धर्मवीर गुप्ता सर को मैं विनम्र भाव से प्रणाम निवेदित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार अर्पित करती हूँ। आदरणीय सर ने उस ऐतिहासिक काल को न सिर्फ बहुत बहादुरी से जिया है, बल्कि डटकर प्रतिकार करते हुए संघर्ष की एक गाथा लिखी है। सर, आपके इस संघर्षपूर्ण जीवन को मैं सभी की ओर से नतमस्तक होकर नमन करती हूँ। अपने अनुभव बांटने हेतु पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार सर। अब इस परिवार अर्थात वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री परिवार की संस्थापिका एवं संरक्षिका एमरिटस प्रोफेसर डॉक्टर अरुणा सिन्हा मैम का मैं हृदय से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ। मैम, ये आपके भगीरथ प्रयासों एवं पुरुषार्थ का ही प्रतिफल है कि ऐतिहासिक अन्वेषण एवं अध्ययन के इस मंच से जुड़कर हम सभी विद्यार्थी भाग्यशाली बनते हुए स्वयं को ज्ञान से आप्लावित कर रहे हैं। मैम, इस बात से हम आश्वस्त हैं कि आपके निरंतर आशीर्वचनों एवं अभिप्रेरणा से निश्चित ही यह संस्थान भविष्य में सत्य एवं अन्वेषण की खोज की दिशा में मूर्धन्य संस्थानों में अपनी पहचान सुनिश्चित करा सकेगा। आपको बारंबार धन्यवाद मैम। धन्यवाद ज्ञापन की अगली कड़ी में इस संस्थान की सहशिल्पी एवं मेरुरज्जू हमारी अग्रजा एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉक्टर जयलक्ष्मी कौल मैम को मैं कोटि कोटि धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हुए प्रणाम करती हूँ। मैम, निरंतर ही आप अपनी ऊर्जा एवं नवाचारी प्रवृत्ति से संस्थान को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत रहती हैं एवं कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु अपनी तरफ से कोई कसर नहीं होती। आपके इन सभी प्रयासों के लिए मैं हृदय से आपको नमन करती हूँ। थैंक यू। अब इस कार्यक्रम की सफलता के साक्षी एवं अपनी उपस्थिति से इस ज्ञानवर्धक वक्तव्य को सार्थक एवं उद्देश्यवान बनाने वाले मेरे अग्रज, अनुज एवं सभी सम्मानित श्रोतागणों को मैं हृदय से विशेष धन्यवाद एवं आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री परिवार के सभी सदस्यों, विशेषतः बैजू, कुलदीप, दीपक, रविकांत, रोशन, दरक्षा, मनीष, रोहित, अंगद एवं नाम के उच्चारण की इस कड़ी में जो रह गए हैं, उन सभी को भी मैं विशेष रूप से आभार देती हूँ, साथ ही धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ ही हमारे मीडिया कर्मी को भी मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। अंतिम रूप से मैं अरुणा मैम को, प्रोफेसर अरुणा मैम को, जो इसके संस्थापिका हैं, उन्हें एक बार पुनः बुलाना चाहता हूँ और कुछ वक्तव्य अगर मैम दे सकें तो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को आपके इस मेहनत के लिए, हमारे श्रोताओं को उनकी पेशेंस के लिए, हमारे स्पीकर्स को उन्होंने अपना इतना समय दिया, अपना इतना अपने ज्ञान से हम लोगों को एनरिच किया। आप सभी को और जिसने धन्यवाद ज्ञापन किया और हमारे सब पार्टिसिपेंट्स और सब लोगों को मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भी और बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस भी। एक बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा और भविष्य में हम लोग इसी तरह से इनको करते रहें, इसी उम्मीद के साथ आप लोगों को बहुत बहुत एक बार धन्यवाद। धन्यवाद मैम। साथ ही एक बेहतरीन संचालन के लिए मैं बैजू जी को भी विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद। अब लास्टली मैं इस जो कार्यक्रम को अब लास्ट में समाप्त करने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं धर्मवीर सर को और हमारे जो समर खजूरिया सर है उनको मैं अपनी ओर से और VIH की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आमंत्रण स्वीकार किए और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो श्रोतागण है उनको अपने प्रकाश से प्रकाशित किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं इसी के साथ इस सेशन को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार सर।
नमस्कार।